नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम पे जो मॉक टेस्ट आरंभ करते तार आज 5 नंबर मॉक टेस्ट आम डिस्कसन करवा। एथिरे मु 50टा इंपोर्टेंट वन लिनियर क्वेश्चन ता सहित आउ किछिटा इनफॉरमेशन आपन को देबी। लागुछि एई वीडियोटी आपन को पई हेल्पफुल होबो आगामी ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम पई। चलंतु क्वेश्चन डिस्कसन स्टार्ट करवा। आजिर प्रथम क्वेश्चन होउजी हु वाज द ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनएनिमसली बट रिजाइंड लेटर ड्यू टू डिफरेंसेस विथ महात्मा गांधी। अर्थात जी कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट होइतिले इलेक्ट होइतिले किंतु पर से रिजाइन दे देइतिले महात्मा गांधी के सहित तांकर त्यक्तता कारण। यार आंसर होउजी सुभाष चंद्र बोस जे कि त्रिपुरी सेशन रे 1939 मसीह अध्यक्षता करथिले एवं पर रिजाइन देकी निजर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था गठन करथिले। सुभाष चंद्र बोसकर मध्य एक बुक रही सेटा होची द इंडियन स्ट्रगल। तांकर मध्य एक ऑटोबायोग्राफी अछि जाकी होची एन इंडियन पिलग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी at the provincial level in British India। आर आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अर्थात यह को भल भाव में जाना जाए कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और सेंटर डायरकी इंट्रोड्यूस होइतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे। नेक्स्ट हु वाज द ऑथर ऑफ द रेवोल्यूशनरी बुक फिलोसफी ऑफ द बम। यार आंसर होची भगवती चरण बोहरा। Next, during the Vedic period, what specific administrative or economic unit did the term गवयुति refer to? अर्थात गवयुति रो माने कौन? आर आंसर होची a measure of distance। Next, which prominent leader of the Indian national movement founded the Servants of Indian Society in 1905? अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किए फाउंड करथिले 1905 मसिया रे। यार आंसर होची गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को मध्य गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भावे जणा। नेक्स्ट द फेमस एंशिएंट आयरन पिलर एट मेहरुली दिल्ली वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच एम्परर। यार आंसर होची चंद्रगुप्त II जहा कि गुप्त डायनेस्टी रो बिलोंग करथिले। आ गोटे कथा मन रखिए फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी होचंदी श्रीगुप्त एवं गुप्ता डायनेस्टी रो कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। नेक्स्ट व्हिच गवर्नर जनरल ऑफिशियली बैन्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन ब्रिटिश इंडिया थ्रू रेगुलेशन 17। आर आंसर होची लॉर्ड विलियम बेंटिक। एहा से करथिले 1829 मसिया रे। नेक्स्ट द नेटिव रिबेलियन नोन एज द सांथाल हुल अर्थात सांथाल रिबेलियन भावे तसे जनाशुना टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। यह केउ मसिया रे घटितिला। आर आंसर होची 1855-56 एवं यार लीडर थिले सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। से कहीं कि एटा सांथाल रिबेलियन हेतिला एग्नेस्ट द टैक्स सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लोकल जमींदार। नेक्स्ट हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क who authored a foundational text on Ayurveda। आर आंसर होची चरक एवं ए बुक टीर ना थिला चरक संहिता। एवं कनिष्कଙ୍କ समय रे आ गोटे घटना घटिला सेटा होची फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होइतिला। एहा होइतिला काश्मीर रे। नेक्स्ट which treaty officially ended the first Anglo Maratha war in 1782। आमर टोटाल 3टा एंग्लो मराठा वार होइतिला। ए प्रथम एंग्लो मराठा वार होइतिला 1775 रु 1782 एवं एथरे गोटे ट्रिटी होइतिला ट्रिटी ऑफ सालबाई। ठीक से बळे सेकंड एंग्लो मराठा वार होइतिला 1803 रु 1805। एथरे मध्ये एक ट्रिटी घटितिला सेटा होइतिला ट्रिटी ऑफ वाशे। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 रु 1818 ट्रिटी ऑफ मांडासुर। ए तीनटा को आपण माने नोट करिकि मन रखिबे। नेक्स्ट द फेमस quadruple inscription provides
हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट व्हिच एंशिएंट डायनेस्टी ऑफ ओडिशा अर्थात कोड्रापला इनस्क्रिप्शन रे केउ एंशिएंट डायनेस्टी रा ओडिसा रा केउ एंशिएंट डायनेस्टी विषय सूचना दिया जायछि। आर आंसर होउछि महामेघवाहन डायनेस्टी अर्थात ताकू मेघवाहन डायनेस्टी भाबर मध्य से जनाशुना। एई महामेघ डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी पर आस्थिला एवं फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी बीसी रे ता राजत्व करितिला। यार फाउंडर थिले महामेघवाहन एवं यार कैपिटल थिला कलिंग नगर। ए महामेघ डायनेस्टी रा जने इंपोर्टेंट रूलर थिले खारवळ जे कि जैनिज्म अडॉप्ट करथिले एवं खारवळ लिखिथिले हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। नेक्स्ट who represent the depressed classes at the round table conference held in London? आर आंसर होची डॉक्टर बी आर आंबेडकर। आंबेडकर जे कि तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे भाग नैतिले। नेक्स्ट व्हिच नैरो वाटर पैसेज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विथ द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी? एटा होची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वर्तमान यह बहुत न्यूज रे रही। ठीक से भाई आउ केतोटी स्ट्रेट विषय में सूचना दूसरी आपण मैंने नोट करके मन रखु। गोटे हूँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जहाँकि आटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करुच्ची। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इंडियन ओशियन टू साउथ चाइना सी। बाबल मंडाब रेड सी टू गल्फ ऑफ आर्डेन। दानिश स्ट्रेट बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिसाइज meteorological name for the transition zone where air masses of different temperatures meet? Air answer होची a front. Next which deep water trench represents the deepest oceanic point located within the Atlantic Ocean? Air answer होची Puerto Rico trench. ठीक से भली आउ केतोटी ट्रेंच विषय में सूचना दूची। मारियाना ट्रेंच जहाँकि अच्छी पैसिफिक ओशियन रे। सुंडा ट्रेंच और जाभा ट्रेंच अच्छी इंडियन ओशियन रे। मकरन ट्रेंच नॉर्दर्न अरेबियन सी रे। डायमंड्रिया ट्रेंच साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वैली इज फॉर्म्ड व्हेन द लैंड ब्लॉक बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स सिंक्स डाउन? आर आंसर होची रिफ्ट वैली और आकु मध्य ग्राबेन भाबरे कुआ जाय। Next which pass provides a critical communication link across the पीर पंजाल range connecting Jammu with Srinagar? अर्थात जम्मू को श्रीनगर सहित कनेक्ट केउ पास टी करूची? यार आंसर होची बनिहाल पास। ठीक से बड़ी आउ केतोटी इंपोर्टेंट पास जोजिला पास श्रीनगर टू लेह। खारदुंगला पास जाकि लद्दाख रेंज रे रही लेह टू नुब्रा एंड सियोक वैली। बारालाचला पास जहाँकि जंस्कर रेंज रे रही लाहौल स्पीति टू लेह को कनेक्ट करुच्ची। काराकोरम पास जहाँकि काराकोरम रेंज रे रही लद्दाख टू जिनजियान प्रोविंस ऑफ चाइना को कनेक्ट करुच्ची। ठीक से पीर पंजाल पास पीर पंजाल रेंज रे रही जाम्मू प्लेन टू राजौरी एंड पुंछ को कनेक्ट करुच्ची। या भल भाव नोट करके मन रखु। नेक्स्ट The planet Venus exhibits structural geological features called corona. What volcanic process forms them? Our answer होची subsurface plumes of hot magma lifting the crust. अर्थात magma टा जेतेबेले crust मध्य जाई ऊपर को उठता है। Next which active volcanic island belonging to India last erupted in 2017? Our answer होची Barren Island. Next what complex microclimatic phenomenon accounts for the stark contrast in annual rainfall between Mumbai and Pune? Our answer होची rain shadow effect. Next which high altitude lake located in Sikkim is considered one of the highest lakes in India? Our answer होची गुरु दोंगमार लेक। ठीक से भाई आउ केतोटी लेक विषय सूचना दूची नोट करंतु। आमर केतोटी सॉल्ट वाटर और ब्राकिश वाटर लेक रही
जहाँकि हूँ संबर लेक राजस्थान, पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पांगंग सू लद्दाख, चिलिका लेक ओडिशा। ठीक से भाई फ्रेश वाटर लेक मध्य उलाल लेक जम्मू काश्मीर, लोकताक लेक मणिपुर, बेम्बादन लेक केरल, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, डाल लेक जम्मू काश्मीर, लोनार लेक टी हूँ गोटे मेटेओरिटी लेक जहाँकि अच्छी महाराष्ट्र रे। ठीक से भाई आउ के आर्टिफिशियल लेक रही गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, धेबार लेक राजस्थान जयसालमर रे, हुसैन सागर तेलंगाना, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ runs parallel to the northeastern coast of which specific state of Australia? यार आंसर होची क्वींसलैंड। नेक्स्ट, which major river system forms the massive regional geography boundary known as the Grand Canyon? अर्थात ग्रैंड कैनियन टा क्योंटी रही? यार आंसर होची कोलोराडो रिवर। नेक्स्ट, what specific type of dense subtropical evergreen vegetation dominates the Mediterranean climatic zone? यार आंसर होची मार्क्विस स्क्लेरेलोफाइलस vegetation। याको आपण माने मन रखिथिबे। नेक्स्ट, which landmark Supreme Court judgment established the legal doctrine of the basic structure of the Constitution? यार आंसर होची केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जहाँकि 1973 मसीह घटिला। Next, under which specific constitutional article can the President of India seek the advisory opinion of the Supreme Court? तार आंसर होची आर्टिकल 143। यह बहुत एग्जाम रे ये क्वेश्चन टी देखिबा को मिलता है। नेक्स्ट, which constitutional amendment reduced the minimum voting age in India from 21 years to 18 years? पूर्वर आमर प्रथम जो कन्स्टिट्यूशन या से भोटिंग एज 21 वर्ष रही पर 18 वर्ष कर दिया। यह कराई 61तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 रे। ठीक से आउ गोटे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मन रखिए 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जो कि राइट टू एजुकेशन टी ऐड करा जार आर्टिकल होची 21A। नेक्स्ट, which schedule of the Indian Constitution contains strict provisions designed to prevent political defection अर्थात anti defection law? यार आंसर होची 10th schedule। Next, who is the only administrative authority empowered to decide whether a bill introduced in parliament is a money bill? यार आंसर होची स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आ गोटे कथा मनी बिल आर्टिकल आपण मन रखिबे आर्टिकल 110। नेक्स्ट, the concept of a welfare state is explicitly incorporated into which part of the Indian Constitution? यार आंसर होची पार्ट IV जहाँ की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे रही। नेक्स्ट, which specialized writ is issued by a high court ordering a public official or lower court to perform an obligatory duty? अर्थात हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि निज ड्यूटी करो। तार आंसर होची मांडामस। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग कैन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी रिमेन ऑपरेशनल विदाउट पार्लियामेंटरी अप्रूवल? तार आंसर होची 1 month नेशनल इमरजेंसी जहाँ कि आर्टिकल 352 अनुसार लगी था। ठीक से भाई स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। नेक्स्ट, which constitutional body is explicitly tasked under article 280 with recommending the distribution of tax revenues between the union and states? अर्थात आर्टिकल 280 रे कहार मेंशन रही है। यार आंसर होची फाइनेंस कमिशन। नेक्स्ट, who acts as the critical administrative link between the union cabinet and the civil services of India? अर्थात यूनियन कैबिनेट और सिविल सर्विस मध्य किए निजर क्रिटिकल एक्ट करथांती? यार आंसर होची द कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, which parliamentary committee is exclusively composed of members chosen from the Lok Sabha? यह एस्टिमेट कमिटी करता है। नेक्स्ट,
Under which constitutional amendment were the words unity and integrity of the nation added to the preamble? Her answer is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. याकु मध्य मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाबे जाना जाए. Next, what distinctive form of chemical bonding involves the continuous sharing of a sea of delocalized valency electrons? Your answer is metallic bonding. Next, which particular human organ functions as a crucial reservoir for red blood cells and recycles old erythrocytes? Your answer is spleen. Next, what fundamental physical principle explains why a rapidly spinning baseball or a cricket ball curves mid-air? यारा ए प्रिंसिपल टी देथिले बर्नौली जाकि बर्नौली प्रिंसिपल भाव में जनाशुना. नेक्स्ट, व्हिच हार्मोन secreted by the human kidney stimulates bone marrow to accelerate the production of red blood cells? अर्थात रेड ब्लड सेल्स अधिक प्रोडक्शन हम क्यों हार्मोन द्वारा? आर आंसर होउची एरिथ्रोपोएटिन. नेक्स्ट, व्हाट स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजेस total internal reflection inside flexible glass strands to look inside organs? आर आंसर होउची एंडोस्कोप. अर्थात एंडोस्कोप माध्यम आमे शरीर भीतर organ गुडी को देखि परियो. नेक्स्ट, which subatomic particle acts as the gauge boson mediating the strong nuclear force that binds quarks together? आर आंसर होउची gluon. नेक्स्ट, what is the exact chemical name of the compound commercial known as plaster of Paris? अर्थात plaster of Paris रो संकेतटी कौन? यार संकेत होउची CaSO पर हाफ H2O एवं यार केमिकल नेम टी होउची कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. नेक्स्ट, what protocol does an email client implement to download messages locally from a remote mail server while deleting them from the host? यार आंसर होउची पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जार पोर्ट नंबर होउची 110. ठीक सही बोली. आउ गोटे आमे मन रखिबा इंटरनेट मेसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जार पोर्ट नंबर होउची पोर्ट नंबर 143. ठीक सही बोली. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25. नेक्स्ट, which structural layer of the OSI reference model determines physical path routing and manages logical addressing? यार आंसर होउची नेटवर्क लेयर. आम टोटल 7टा लेयर रही. नेक्स्ट, what specific type of system architecture allows a microprocessor to process multiple software instructions concurrently using hardware pipeline? यार आंसर होउची सुपर स्केलर और आपको मध्य कहा जाए RISC आर्किटेक्चर भाव से मध्य जनाशुना. नेक्स्ट, व्हाट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम रिलाइज ऑन पेयर्ड कीज यूटिलाइजिंग ए पब्लिक की फॉर एनक्रिप्शन एंड ए डिस्टिंक्ट प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन? अर्थात प्रथम एनक्रिप्शन करियो पर डिक्रिप्शन करियो. आर आंसर होउची एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन. अर्थात आपको मध्य कहा जाए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. नेक्स्ट, इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स what structural constraints prevent duplicate data values across records in a column? आर आंसर होउची यूनिक की अर्थात आपको मध्य कहा जाए प्राइमरी की कांस्टेंट. नेक्स्ट, which standard wireless networking standard or a protocol family is technically designated by the label IEEE 802.11? आर आंसर होउची वाईफाई. वाईफाई रा फुल फॉर्म होउची वायरलेस फिडेलिटी. हमारा आज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू इंटरमीडिएट असेंबली कोड और ऑब्जेक्ट फाइल्स? यार आंसर होची कंपाइलर. एथि सहित आमे 50 टी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कशन कले. एई क्वेश्चन टी जदी आपनको आपनकर आगामी परीक्षा पई हेल्पफुल रहिबो ताले आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलियो नाही. वीडियो टी कंप्लीट देखिबारु धन्यवाद.